Hey guys, you watching trueAKspeaks. मैं हूँ आयुष and this is the video for how you will make the intros and outros for your YouTube videos और उनके लिए आपको म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा. एक्चुअली मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए थे दैट मैं बहुत ही नई नई चीज़ें डाल रहा हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो उसके लिए मैं बता दूँ दैट इट इज़ रियली ईजी to get those things. First of all, let me tell you how you will get the music. तो उसके लिए पहले you need to go to the YouTube and search for NCS. ये एक बहुत अच्छा YouTube चैनल है and its name is No Copyright Sounds. और यहाँ जाकर आप बस किसी भी एक वीडियो को आप उस पर टैप कर लीजिए and after the ad, okay now and you can see that it has started and just tap on screen record और फिर आप screen recording start कर दें. Okay, let me skip to the beginning and ये screen recording कर रहा है and after the screen recording let me tell you how you extract the sounds and this is also the video for how you will extract the audio from your video files. Okay, I have stopped the recording. Let me tell you that this is only for example. तो मैं ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं खींचना चाहता. तो एक्चुअली मैंने प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल की है दैट इज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ऑडियो फ्रॉम वीडियोज़. एक्सट्रैक्ट ऑडियो and okay, you can see over here that many आपको सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे which will help you in order to extract the mp3 file from your video file. मैंने ये वाला किया था and I will give you the links of some good apps for this purpose in the description of the video. और फिर मैं इस ऑडियो वीडियो एक्सट्रैक्टर पे जाऊंगा. देन गो टू एक्सट्रैक्ट वीडियो. सी this video is for showing you how this thing works. Okay, जबकि मैंने ये अभी 18 सेकेंड की रिकॉर्डिंग की है. लेट मी टैप ऑन एक्सट्रैक्ट ऑडियो एंड दिस विल बी द फाइल नेम. आप इसे एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं एंड लेट मी क्लिक ऑन डन. और यहाँ पे इसने ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर भी दी है. एक्चुअली बहुत छोटी सी फाइल थी तो इट डिडंट टुक मच टाइम. ओके नाउ लेट मी शो यू कि इसने फाइल्स कहाँ एक्सट्रैक्ट की हैं. आई मीन ऑडियो फाइल्स जो एक्सट्रैक्ट की इसने वो कहाँ हैं. एंड यू कैन सी इन द DCIM folder there is a folder called audio extractor and okay, let me show you the recent one. Okay, it will extract the audio on any of the folders and उसके बाद मैं intros का वीडियो कैसे बनाता हूँ and for the same I use this Canva application and okay, this is regarding the outro of my recent video. मैं यहाँ पे उस outro को बना रहा था and here you just need to go to search and select YouTube outro या फिर intro and यहाँ पर आपको बहुत सारे templates मिल जाएंगे and you can even edit them. Let me just show you how to edit this one. You can see that these are text and यहाँ पर मैं जो भी डालना चाहूँ that I can put over here and you can see that it's working and let me just tell you कि एक बार इन्हें सेव करने के बाद एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ सेव किया था एंड आफ्टर सेविंग you can just go to any of the video editor and from the video editor just put the file जो भी आपको म्यूज़िक लगाना है. जैसे कि वो ऑडियो फाइल मैंने यहाँ पे जो ऑडियो फाइल सिलेक्ट की थी I have selected it over here. You can see the all the 3 audio files are over here. और उसके बाद चूज़ कर सकते हैं आप एंड देन टिक एंड
it I've got over here. और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे and you will get the finished product. Okay, I'm not going to make any changes, and VN is the thing that I use in order to edit my YouTube videos. Okay, this is how you'll make the intro and outro, and how you'll get the no copyright music for your YouTube channel. Okay, you have been watching trueAKspeaks. If you like my videos, please share and subscribe to my channel. Okay, thank you. Yeah.